Hi students, welcome to Sagi Education. Today's topic is Padbandh. Before moving on to Padbandh, we will see what is Shabd, what is Padh. शब्द क्या होता है? वर्णों के मेल से बनी हुई सार्थक इकाई को शब्द कहलाता है. When we join letters, that time we will get a sarthak ikai. Sarthak ikai means a meaningful unit. That is called shabd, word. For example, ka plus ma plus la, we are getting kamal. Ka, ma and la are varna, letters. When we are joining these letters, we are getting a meaningful unit that is called shabd. And one more thing, shabd is independent. Kamal is independent. Now moving on to पद. वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहलाता है. When we are using these words in a sentence, that time that is called as पद. For example, रमा नाच रही है. Here रमा is a पद, नाचना, that verb is a different पद. Shabd was independent. When we are using that shabd in a sentence, that time it will become pad, and here that pad is dependent. पदबंध. जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक पद का कार्य करते हैं तब उन्हें पदबंध कहा जाता है. When we are joining two or more pad in a particular sentence, that is called padbandh. Padbandh is nothing but a phrase. पदबंध के भेद: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध. There are 5 types of पदबंध. First one, संज्ञा पदबंध. वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे संज्ञा पदबंध कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था. हियर द अंडरलाइंड phrases लंका का राजा रावण. सो हियर रावण is a sangya, so we can easily identify this particular sentence as sangya padbandh. One trick to identify it is you see the last word of the underlined phrase. The last word of this underlined phrase is here Ravan. Ravan is a name, that is a sangya, so we can identify this is a sangya padbandh. नेक्स्ट सर्वनाम पदबंध. एज यू ऑल नो, सर्वनाम मीन्स प्रोनाउन. वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे सर्वनाम पदबंध कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ पकड़े गए. एग्जाम्पल्स ऑफ सर्वनाम आर मैं, तुम, आप, ये, वह, यह, वह, कोई, कुछ, कौन. ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सर्वनाम. सो हियर कुछ is the last word, so कुछ is a sarvanam, so this is a sarvanam padbandh. क्रिया पदबंध. क्रिया means verb. वह पदबंध जो अनेक क्रिया पदों से मिलकर बना हो क्रिया पदबंध कहलाता है. उदाहरण, सुरेश नदी में डूब गया. Here the underlined phrases डूब गया, डूबना, to drown, so that is a क्रिया, so this is क्रिया पदबंध. विशेषण पदबंध. विशेषण means adjective, those words that describe a noun and pronoun. जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बताता है वही विशेषण होता है. यह वह पदबंध जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाता हुआ विशेषण का कार्य करे विशेषण पदबंध कहलाता है. हियर अंडरलाइन थिंग इज संज्ञा या सर्वनाम. दैट अलोन यू शुड सी if the particular word is describing a noun or a pronoun. For example, तेज चलने वाली गाड़ियाँ प्रायः देर से पहुँचती है. So here what they are describing, they are describing about the गाड़ियाँ, vehicles. Vehicle is a noun, so they are describing here vehicle, so this is a visheshan padbandh. And one trick to find out if it is a visheshan, in the phrase if they are giving wale, ऐसे चल, see here also तेज चलने वाली, that wale, wali, if you see that is visheshan padbandh. That is a trick to find out it. Next, kriya visheshan padbandh. Here kriya visheshan means we are describing adverb, we are describing a kriya. Visheshan, we are describing a noun and a pronoun. Kriya visheshan means we are describing a kriya. Don't get confused. For example, आज गाड़ी बहुत जल्दी आ गई. So आज गाड़ी कैसे आ गई? बहुत जल्दी आ गई. So आना is a verb. This बहुत जल्दी is underlined phrase. So this बहुत जल्दी is connected with what? आना. So कैसे आ गई? बहुत जल्दी. So this is a kriya visheshan padbandh. And also if we ask question to the particular verb, if you are getting answer, that is kriya visheshan padbandh. That is a trick to find out kriya visheshan padbandh.
Hope you liked the video and you understood the concept clearly. Thanks for watching.